Assalamu alaikum, Mehreen. Islam. Thank you for joining us. Welcome, everyone. We are here on Woman to Woman Forum with Mehreen Jabbar. And she is gracious that she's giving us this time and will share her life story, her visions, her aspirations, and her journey that has brought her here with us. So, Mehreen, you actually believe in empower, uplift, inspire, and together. That's our motto of Woman to Woman Forum. And we always look for inspiring women who not only empower themselves, but also lead and empower others along uh, themselves. So we believe that you are, a perfect match on that, as you have made so many TV dramas. I believe more than 30 in past 2 decades, for movies. That's like, I think you were on Red Bull on years to do all this. This is huge accomplishment. So we want to hear like how you did it. Like what were you really doing besides being maybe on Red Bull? Oh God, that is a very long question. Thank you for having me, first of all. अब आप कह रही हैं कि मैं आपको 2-2.5 डेकेड जो जितने भी हैं वो पीछे जाके सोचूं मैंने शुरू कैसे किया. I think उस वक्त ये था, I mean, I was singularly focused on this. It is my passion. It's something, thankfully, when I was growing up, this is what I wanted to do all my life. So वो जो एक struggle होता है ना कि मैं डॉक्टर बनूं या एक्टर या डायरेक्टर बनूं या इंजीनियर, वो नहीं था. आई जस्ट न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू बिकॉज यही आता था और कुछ आता नहीं था. सो दैट काइंड ऑफ फोकस वाज राइट व्हेन आई वाज मे बी मैं जब 12-13 साल की थी जब से शुरू हुआ. तो आई नो व्हेन आई लुक बैक काफ़ी चीज़ें बना ली हैं. अब रेड बुल की जगह कैमोमाइल टी पी रही हूँ. चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा, तो लोग कहते हैं ना कि आई ड्रीम्ड एंड आई मेड इट हैपन. तो मुझे लग रहा है कि आपकी कहानी वही है. आपने वाकई ख्वाब देखा और उस ख्वाब को पूरा किया. मगर क्या आपको लगा कि क्या आपकी स्ट्रगल्स थी जिसको एम्पावर, अपने आप को एम्पावर करना पड़ा आपको? तो कुछ लोगों को अपनी जर्नी बताएं. लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं, उसके तो अब्बा भी यही करते थे और उसकी वालदा उसको बहुत सपोर्ट करती थी. तो ऑल दैट इज देयर, पर आपकी भी तो एफर्ट है ना इसमें. जो आपको मिला वो अलग चीज है, बट उससे आपने अपने आप को आगे कैसे बढ़ाया? वी वांट टू नो दैट कि क्या क्या आपकी स्ट्रगल्स रही. Okay, so yes, definitely. I think base बहुत supportive था. So I'm very lucky कि parents ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि ये क्यों कर रही हो. But at the same time, having said that, as you said yourself, कि even if you have the support, अगर आप वो मेहनत नहीं करते, वो hard work नहीं करते, and you don't remain dedicated, then आपको वो success मिलना ज़रा सा और मुश्किल होता है. In the sense कि in the end जो आप कहानियाँ बता रहे हो, जो आप put forward kar rahe ho to the audiences, it has to be received with that love or with that acceptance. So जो struggles, I guess, हर decade and हर साल में struggles different थी. जब मैंने शुरू किया in the early 90s, I think I was one of the very few female directors उस ज़माने में. There were many जो हमारी pioneers थी, सायरा काज़मी and film में संगीता जी, शमीम आरा. But उस ज़माने में in the 90s, I think Saira GB was kind of, towards the ending her career, and उस वक्त I was kind of feeling a little lonely because इतने थे नहीं. बाकी मुझे याद नहीं आ रहा कि उस ज़माने में as a director in the 90s मुझे याद नहीं है. But at the same time, मेरे जो struggles थे वो ज़्यादातर थे about, उस वक्त infrastructure नहीं था या उस वक्त private productions इतनी नहीं थी. वहाँ हमारे पास सिर्फ PTV NTM था. So just to make your mark as an individual non-PTV director, मेरे लिए ज़रा सा challenging था. So that was that struggle. उसके बाद आ गया ये बहुत सारे channels आ गए. उसके बाद मेरा struggle था to make serials because मैंने शुरुआत सिर्फ टेलीफिल्म से की थी. And suddenly वहाँ से लेके जब आप 14-15 and eventually 25-26 episodes पे जाते हो, you have to learn how to tell a story in that medium as well. And then changing audiences जो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में. तो
Yeah, it's a very broad question. So, हम्म, struggle तो अगर आप मुझे specifically पूछो, but there are so many, I don't know how to आपने quantify all of them. आपने ना सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करने के लिए यहाँ आके उसकी पढ़ाई की यूसीएलए में और उसके बाद फिर आपने अपनी पहली मूवी बनाई रामचंद पाकिस्तानी और उसका जो मैंने आपकी ये मूवी देखी थी सैफ Mhm, अवार्ड्स सॉरी फिल्म फेस्टिवल mhm, हुआ था न्यूयॉर्क में तब देखी थी मैंने। mhm, मैंने mhm, कहा अरे वाह! हमारी पाकिस्तानी डायरेक्टर भी इतने बड़े-बड़े काम करने लगी हैं, तो mhm. उस वक़्त मुझे पहली बार आपके काम का इन अ बिगर मीडिया अंदाज़ा हुआ था। सो एंड आई न्यू दैट दैट वाज़न्ट ईज़ी कि आप आम फ़िल्म फेस्टिवल में आपकी मूवी आए और आप उस जगह पे पहुँच जाएँ कि आपको एक्नॉलेजमेंट मिले। सो डेफिनिटली यू माइट हैव वर्क्ड वेरी हार्ड बिफोर दैट टू मेक इट हैपन। I guess उस वक्त जब ये फिल्म बनी थी रामचंद, this was 2006 2007 हुँ, and उस जमाने में हमारे पास मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे really. फिल्म was at a total kind of decline पाकिस्तान में. हुँ, इससे पहले खुदा के लिए जो शोएब साहब की थी वो आई थी and उससे पहले बहुत कम फिल्में आ रही थी in हुँ, on the national scale. So जी, जी। रामचंद itself एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था जिसमें lot of people contributed. This was a community based production. हुँ, एटलीस्ट 10-15 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान में उस तरह की स्टूडियो फंडिंग या फाउंडेशंस और ग्रांट्स नहीं होते एंड ये कहानी भी ऐसी थी विच वाज नॉट योर मेन स्ट्रीम नाच गाने वाली जो हुँ, इजीली जिसको पैसे भी मिल जाएं सो इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज एटलीस्ट इस फिल्म के साथ वन गॉट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद इट हुँ, प्रीमियर यहाँ ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल में जी, हुआ था न्यूयॉर्क में एंड देन आई प्लेड इन many countries so it was lovely to see audiences react and say, okay, thank God we can see a film from Pakistan. राइट, डेफिनिटली एंड नाउ वी वांट टू सी सच मूवीज़ इन द लार्जर मीडिया। मगर आई थिंक उसके लिए फिर होगा कि या तो सबटाइटल्स ऐसे होने चाहिए या अंग्रेज़ी बीच में इतनी होनी चाहिए कि द बिगर Mhm. audiences can appreciate it too. But definitely, it was worth, you know, Thank you. yeah, going and exploring you. That's when I get to know you, the more um, at that time. अच्छा, उसके अलावा आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी, आपको माशाल्लाह इतने अवार्ड्स मिले हैं। मैं तो लिस्ट देखी तो प्राइड ऑफ पाकिस्तान एंड लक्स स्टाइल अवार्ड और अनबिलीवेबल एंड इट्स Really? अच्छा, जी, जी, जी। आप मेरे विकिपीडिया पे जाइए, उसी पे लिस्ट आपको इतनी आई मिल थिंक पता जाएगी। नहीं किसने फीड किया हुआ विकिपीडिया पे चीजें मुझे तो नहीं पता जी, तो मैं मेरे हैरान चेक हो है रही थी कि किस अवार्ड की बात करूँ, किसकी नहीं करूँ। हम टीवी अवार्ड्स आपको माशाल्लाह यू आर अ वेल राउंडेड पर्सन और अगर पाकिस्तानी डायरेक्टर्स में देखो तो शर्मीन उबैद और आप साथ-साथ आपका नाम आ रहा है जब सर्च करो तो। दिस इज़ लाइक माशाल्लाह हम जहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन होने के नाते वी फील सो प्राउड कि सच नेम्स आर देयर दैट वी कैन से ओह हमने ऐसी ख़वातीन प्रोड्यूस की हैं जो अमेरिका में भी हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं। एंड सो ऑन द सेम कॉन्टेक्स्ट आई जस्ट वांटेड टू से इस आस्क कि इतने टीवी ड्रामा बनाने के बाद आपको लगा या मूवीज़ जो भी आपने बनाई हैं, कि ये वाली जो मैंने बनाई है, ये मुझे रिप्रेज़ेंट करती है। दैट्स द वन दैट आई विल होल्ड ऑन टू एंड से कि ये मैं हूँ। वेल ये सारी जो चीजें सीरियल्स और ये दे लाइक योर बच्चास या तो बड़ा मुश्किल है कुछ टेढ़े निकल आए कुछ सीधे निकल आए सो आई डोंट नो इट्स वेरी टफ टू से ओवर 25 इयर्स के बहुत मतलब बहुत सी हैं जो मुझे बहुत मजा आया उनका एक्सपीरियंस बहुत मजे का था कुछ सम सक्सीडेड सम डिड नॉट सक्सीड किसी पे गुस्सा भी आया तो I don't know. I think for me, I think as an experience, I think Ramchand Pakistani as a film was hugely. I think मैंने बहुत सीखा है उससे गलतियों से और जो positive experiences थे. And serials अब इतने किए but one of some of my personal favorites अब कोई रह गया तो मसला हो जाएगा but I think कहानियाँ which is one of my favorite series which I did in 2000 then पुतली घर was the telefilm दाम जो रिसेंटली था जैक्सन हाइट्स और अभी भी एक झूठी लव स्टोरी भी बहुत मजे का था Z5 पे जो है सो अच्छा, आई डोंट नो हाउ टू से एक कौन था सारे अच्छा, ठीक ही थे अच्छा, अच्छा और या फिर आपको लगता है इसी इसी मौज़ू पे आगे बढ़ते हैं।
कि if there is something that you really want to do and you have not done yet, if such Oh, aspect. many. You know, a director and a storyteller's Google Docs or notebooks are always full of unrealized stories. Hmm. तो मेरे पास भी बहुत बहुत गूगल डॉक्स हैं बहुत सी कहानियों के जो कहानियां कभी कभी ऐसा होता है आप सोचते हो और you're lucky कि आपको प्रोड्यूसर मिल जाता है कुछ आप सालों से काम कर रहे होते हो और वो रहता है कभी कुछ होता नहीं किया कभी बन भी जाता है सो देर आर 2-3 आइडियाज जो मैं कब से उन पे जिसे मैरिनेट कहते हैं ना वो कर रही हूँ बार अच्छा बार खोल के देखती हूँ उनको फिर बंद कर देती हूँ एंड वेट करती हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिले या कोई फंडिंग दे या मैं फंडिंग ढूंढूं सो देर आर सम ऑफ दोज आइडियाज दैट आर स्टिल देयर अच्छा तो हम इस प्लेटफॉर्म से शाउट आउट कर सकते हैं कि हे aspiring producers, if you need to do something, we have यस someone like. filmmaker is always looking for producers Hmm. their entire life. अच्छा. So Yes. telling good to know. So Yes. all those friends who are here who wants to, pursue something, we have a story, we have a director, it's just the production, and you have a team even. You have built up Yeah, a yeah, we have to. We only don't have one little thing, which is money. little. Definitely. अच्छा और तो आप ये इस पे तो बात हो ही गई वरना मेरा अगला सवाल था कि कहानी पिक करने में आप अमारा भी कोई सवाल कर रही हैं चलें अमारा का सवाल लेते हैं अमारा हमारी टीम का हिस्सा है व्हाट इज वन एडवाइस दैट यू would give to young aspiring director or producer? I would say it's not for the weak or faint-hearted. It's kind of lage raho or lage raho or lage raho, and eventually things will happen. It's a lot of hard work and persistence and consistency. So that's Right, very important. Hard work and to be consistent and to have a thick skin. right. Okay, And there will be many rejections that come your way, but you have to keep at it. perfect. And actually, in the end, a lot of people think, oh, film डायरेक्टर हैं वो तो खजाने उनके जेब में रखे हुए हैं सो दिस वन थिंग दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड जैसे राइटर्स होते हैं तो उनके पास कहानियां बहुत होती हैं पर्सनल रिवॉर्ड्स बहुत होते हैं अपने अच्छा काम करने के बाद बट मे बी द रिवॉर्ड माइट नॉट बी अ बिग फाइनेंशियल रिवॉर्ड. Oh, absolutely. I think this industry is very difficult, and especially America, तो बहुत ज़्यादा competitive है. Unless you hit it big, a lot of people just keep, उनके छोटे-छोटे projects होते रहते हैं, and then eventually you hope to hit the jackpot. But otherwise, people do small or medium-sized work, are happy with it, as long as जो आप कहानी बता रहे हो, you are passionate about it, and it's a story you want to tell. ठीक है. आपकी मुझे एक जो ड्रामा देखा था वो मुझे खुद से मैं बताना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि एज आई सेड आई वर्क विद youth and I am a mother and mother of two girls and I feel one of your TV drama Rihai that you work with Mhm. Kasha Foundation and I think it was an original story from that foundation that hit me really a lot. A story of a woman who Mhm. raised a son who did not appreciate her. Mhm. So, मुझे लगा जैसे because I'm a community worker and I feel that these community stories impact me a lot. And when you brought that to the screen, you did a wonderful job. And I'm sure there are many people like me who felt very close to it. So, any aspirations for bringing such more stories because that is definitely I call it a community work of yours. Thank you. I mean, that was an opportunity given to me by Kash Foundation and Hum TV. Mhm. पहले इन्होंने ये किया फिर next was उदाड़ी जो बहुत Mhm. popular हुआ था also. And these are important themes to tell on television and because Rihai was a very tough subject because not only जैसे आपने कहा it's a child that this mother raises who doesn't turn out to be the kind of person she wants. It's Yeah. also about child marriage, which is a very, very Right. difficult subject Mhm. because it's actually rape
when you marry a child, Mhm. and usko hum TV screen pe kis tarah in a not Sensitive in a topics. non, because TV screens reach people's houses and in their drawing rooms, so it has to be done in a very sensitive manner Mhm. to portray it, and to even use the actors I was using, Yeah. to portray that subject. So I feel television, unfortunately, जब ये foundations आती हैं to sponsor, जब ही फिर ज़्यादातर, I won't say all of them, but they focus on such themes. But usually रुझान हमारे ड्रामों का, usually, again, बहुत सारे अच्छे exceptions हैं, but majority या हल्ला गुल्ला में निकल जाते हैं over the top चीजों में. राइट, हम उस वक्त बैक स्टेज बात कर रहे थे आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स का जो आपने बहुत सीरियस टॉपिक्स पे नहीं किया, क्योंकि नाउ आई वुड लाइक टू ट्रांजिशन अ लिटिल बिट. मैंने जो आपके देखे हैं टीवी ड्रामास और मूवीज, वो जरा सीरियस टॉपिक्स पे देखे हैं, और आप वाकई बहुत आराम से, आपका स्टाइल ऐसा है कि यू कनेक्ट विद द हार्ट्स वेरी क्विकली. पर क्या नॉन सीरियस आपका प्लान है किसी एस्पेक्ट पे काम करने का, या बच्चों के किसी प्रोजेक्ट पे और यूथ के किसी प्रोजेक्ट पे, तो उसके कुछ प्लान्स हैं? क्योंकि एज अ सोसाइटी वी नीड टू लुक एट नॉट जस्ट द व्यूअरशिप बट समथिंग विच इज एब्सेंट. मुझे इतने यूथ के और बच्चों के नजर नहीं आते हैं प्रोजेक्ट्स मीडिया पे किए हुए. No, you're right. I think काफी dearth है of content focusing on the youngsters, whether it's children or teenagers or college going. मैंने recently last year एक branded show किया था, sponsored by Candy Biscuits, which was college musical. तो उसका obviously tone was light-hearted, but I think we dealt with very interesting subjects, like a child going through a divorce of parents, or a single father raising his son, the conflict between music, education. इस तरह के उसमें हमने themes डाले थे, even though it was just 6 episodes of 20 minutes each. So एक वो किया था, एक झूठी love story is also about the social media and false identities and obsession with shadi culture, all of that. But I do feel there is a huge dearth. I feel कि बहुत ज़्यादा, और हमारी market, especially जो young लोग हैं, वो सबके पास phones and iPads हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो बहुत सा कंटेंट देख रहे हैं, एंड उनके लिए हमारी एरिया से बहुत कम चीजें आ रही हैं, एंड इट शुड हैपन. आई टोटली एग्री विद यू. Right. Definitely. So we are looking forward to have some of your work in that direction done, right? Especially छोटे बच्चों के लिए भी. हमारी टीम उर्दू पढ़ाती है, मैं भी पढ़ाती हूँ उर्दू, और आजकल हम पाकिस्तान की एक यूट्यूब सीरीज देख रहे हैं. उनका नाम है बेकार फिल्म्स. कुछ 3 लड़के हैं कराची के, उन्होंने शुरू किया है बनानी, और उसकी ज़बान इतनी आसान फ़हम है और इतनी वो शैतानियाँ, उल्टी-सीधी हरकतें कर रहे होते हैं कि बच्चे उसको बहुत आराम से, सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स बहुत आराम से फ़ॉलो कर लेते हैं. तो हम यहाँ पे एज़ लैंग्वेज एजुकेटर्स वी कॉल इट ऑथेंटिक मटीरियल. सो हमें ऑथेंटिक मटीरियल अपने बच्चों को पढ़ाने को मिल नहीं रहा होता है. एंड वेरी रेयरली, जैसे बेकार फिल्म्स हैं जिन आइडियाज़ पे बनाई है, तो हमें यहाँ के यूथ को भी कनेक्ट करने के लिए और यहाँ के यंगर यूथ को भी कनेक्ट करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए है. बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल. और यहाँ जो हमारे इतने अच्छे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, शुड एक्चुअली फंड प्रोजेक्ट्स. अब तो देखो यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत कुछ हो रहा है. पीपल आर डूइंग वेरी लो कॉस्ट बट गुड स्टफ, बिकॉज हर चीज टीवी पे नहीं आ सकती, या सिनेमा तो बहुत मुश्किल चीज है. So I think that's a very good idea. The diaspora should get together and finance some projects like this. बिल्कुल, because language से connection बहुत कम है हमारा. Urdu, I feel, is in our generation that's growing up, it's a lot of effort the parents have to make to have them learn or to speak Urdu. And मुझे इस तरह पता चलता है because when I look for actors here, it's है बहुत, but fluency in Urdu फिर भी जरा मुश्किल है of kids who are raised here. सबीना, अगर पिछला वाला सवाल दोबारा से रखो. हाँ, तो यहाँ हमारी दोस्त हैं इरम, उन्होंने सवाल किया है कि आप कोई वर्कशॉप यूएस में करने का आइडिया कर सकते हैं. दैट वुड बी अ गुड मनी मेकिंग वेंचर टू सपोर्ट अ प्रोजेक्ट. आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट. यू हैव सो मच टैलेंट. Bring them on the set. Let's take some interns and why not fund some projects with that.
Yeah. I have taken interns here whenever I've shot here. Like people, जो अब have become, they are now ADs and producers. But workshop नहीं किया. I think that's not a bad idea. I'm open to it because I do live here most months of the year. चलिए फिर हम इस पे बात करते हैं क्योंकि हम एजुकेटर्स हैं, हम कोर्स डिजाइन करते हैं, तो वी कैन गाइड यू इन दैट डायरेक्शन, दैट वुड बी वंडरफुल। अच्छा, और नबील जो है, नबील भी इन्होंने अपनी वेब सीरीज बनाई है, और ये भी ये हमारे सारे बहुत क्लोज वुमन टू वुमन के फ्रेंड्स हैं और बहुत क्लोजली हमारे साथ काम करते हैं। So he's saying he's been looking for your work as a director, and his question is how hard it is to break the monotony, sorry, in Pakistani drama industry. So he's thinking of getting out of the box, kind of. Yeah, it can happen, but it's always difficult because our drama industry focuses zyadatar on ratings and what sells, Yeah. and in what their mind sells, right? So, but I have not seen Parizad, but I have heard fantastic things about it, and I think that kind of broke a pattern. Right. Unfortunately, अगर देखा होता मैं और बात कर देती, but I've just heard amazing things about it, and जी. so it is tough, but it is possible. It's become tougher, I feel, in the last 5 years, to be honest. और मैंने भी ड्रामा सीरियल नहीं किया, 3-4 साल हो गए इसी वजह से, because scripts जो ज्यादातर मुझे ऑफर होती हैं which are mostly run of the mill and things that I don't want to, stories I don't want to tell anymore. जी, So उमैरा अहमद की बहुत आ गई हैं, कई ड्रामाज उन पे बन गए हैं। So I've seen, just few writers जिनके ड्रामे बन रहे हैं बार-बार. So yes, and of course, one writer has one aspect of, life. तो फिर अगर उन्हीं के बार-बार ड्रामे बन रहे हैं, तो होता ये है कि फिर उन्हीं की थिंकिंग प्रिवेल करती है. So एक्चुअली उमेरा के तो फिर भी अगर, बट काफी राइटर्स आ रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज दे आर काइंड ऑफ फॉलोइंग द सेम पैटर्न ऑफ स्टोरी टेलिंग, व्हिच इज एक चीज हिट हो जाए अगर एक सब्जेक्ट पे, तो उस पे 10 और ड्रामे बनना शुरू हो जाते हैं. तो प्रॉब्लम ये हो रहा है. और हिस्ट्री के मौजू को आपने कभी सोचा लेने का? हिस्ट्री का बिल्कुल वो ड्रामे में हमारे पहले, आई रिमेम्बर पीटीवी पे बनते थे हिस्टोरिकल ड्रामास, इफ यू रिमेम्बर. आजकल बिल्कुल नहीं बनते. आई थिंक बजट कंस्ट्रेंट्स हैं. अगेन लोग ये सरमद ने बनाया था नूर महल सम इयर्स अगो, बट अदरवाइज नहीं बनते. या आई थिंक इट्स मोस्टली it's the hold of TV channels, production houses, mostly TV channels, उनकी demands कि हमें अभी currently ये sell कर रहा है, ये love triangle या ये kind of subject, तो हम अब इसी तरह के देंगे. So अगर people pitch ideas also, तो वो approve नहीं होते, unfortunately. राइट, ओके. सबीना भी आ गई हैं, तो सबीना के भी कुछ सवालात हैं. मैंने आपका बहुत देर अपने सवालों से आपको बोर किया, बट सबीना के कुछ जबरदस्त सवाल है, वो भी लेते हैं. Actually, I was gonna go on, and I joined now because I think this is the right time. So I agree कि हमारी history के ऊपर इतने ड्रामे नहीं बने हुए, but now see how Sanjay Leela Bansali is taking a Pakistani subject. And he is creating something. And अब पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई हमारी subject है, why are they going forward with it? So what are your takes on that? He is working on a production. हीरा मंडी जो जी. हाँ. मतलब he is doing it because he has the resources to do it. I think storytellers को मैं कभी नहीं कहूँगी ये करो वो ना करो. That's I think the spirit of banning or censoring people is not in my that's not the principles I hold. But I feel instead of blaming other people, we need to figure out our own industry and see how to improve it and what to do better. And अगर हम बनाना चाह रहे हैं हीरा मंडी पे, आप बनाओ, कोई रोक थोड़ी रहा है हमें. Right. And then also I wanted to ask, क्योंकि productions America में you have that option, you have made productions here, but when you're making productions here, I mean, you have a bigger variety of subjects that you can work on. You can make it as bold, I say, as you want. But do you have that thought process in behind कि ये मैंने पाकिस्तान में air करनी है, so I have my audiences, it has to be in a certain limit? Or do you think that in the future you do want to tackle those subjects, those taboo topics? I feel I've tackled taboo topics actually in the 90s more than I've ever tackled in the last 6-7 years. जब मैं PTV पे चीजें दिखाई थी. And अब I'm not interested in just tackling taboo for the sake of taboo. Also जो मैंने यहाँ ज़्यादा काम किया है वो diaspora की stories पे किया है.
and they are mostly human stories, whether it was Jackson, which was immigrant story, ya Malal jaise tha. That was just a story of, two older people who could never really get married, or a younger girl who comes to New York and is trying to adjust, or Vassal, which was, relationship issues, yeah, New York Stories, which was about young people who live in New York. So there's been a variety of themes. I am not someone who wants to get into sensationalizing or get into sensational stories for the sake of it. And also ये सारी कहानियां चली हैं पाकिस्तान में, तो and Pakistan is governed by certain censor rules जो मैं जब से देखती आ रही हूँ, वो चेंज होते रहे ना from the 90s onwards. And when we talk about the censor board, abhi हाल ही में आया था, oh, we don't want to see hugging on screen and it has to be very this and that. So ekdam se, all of a sudden now we see a lot of violence on screen. So what's your take on like aajkal ke jo dramas aa rahe hain? Two things. First, there's that whole घरेलू मसले and the saas bahu things, and then the sister-in-law is running after the brother-in-law and वो घर तोड़ रही है और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. So एक तरफ वो कहानियां है और दूसरी तरफ ये जो violence का आया है all of a sudden. There's आजकल एक हाल ही में ड्रामा है, फिरोज खान का ड्रामा है, and there's a lot of violence in that one. Angry young man and all these things, and how they depict American Pakistanis in there, because this is an American Pakistani, usko Islam ke bare mein kuch nahi pata, what is Islam, what is namaz, and all these things. So I mean, what is your take? My take is I wouldn't pinpoint one particular drama, but in general, I feel writing is getting kind of lazy. As I said, वो एक डगर पे निकल जाते हैं कि ये चल गया है, इस तरह का कैरेक्टर, इस तरह की स्टोरी, बस इसी तरह के बनाते रहो, replicas, right? I feel writers need to experiment more with the genres, and mainly the channels need to get out of their funk. It's not कि आप इस तरह के ड्रामे ना बनाओ, but आप दूसरी तरह के भी साथ साथ बनाते रहो, ताकि आपको हर तरह के ऑडियंस की आपको हर तरह की ऑडियंस को आप केटर कर सको. My only problem is that we are making just a particular kind of drama, except for a couple of exceptions here and there. जो ये चीज पहले नहीं होती थी in the 90s. I think that, as I was saying, जो मैंने सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और मजे का काम जो किया हुआ है वो 90s और अर्ली 2000 में किया है. जो असल गंद मचा है वो लास्ट 5-6 सालों में मचा है. Okay, and we have a question from Beanish. Do you think that it's the industry that fulfills public demand in terms of topics, content of TV, dramas, or it's vice versa, with then dictating public conversations and content? I think it's an excellent question. I think it's a mix of both. जैसे आप यहाँ अमेरिका में जेरी स्प्रिंगर शो भी हुआ है, राइट? और यहाँ बहुत इंटेलिजेंट टेलीविजन ड्रामास भी हुए हैं. सो society is not homogeneous, it's not monolithic, it comprises of all kinds of people. तो अगर आप एक ही डिनोमिनेटर को फोकस कर रहे हो, तो फिर अगर आप ट्रैश टीवी ही दिखाए जाओगे, तो फिर जैसे अगर आप मैकडॉनल्ड्स देते रहेंगे तो आप फिर अनहेल्दी होंगे, राइट? So you give that. Sometimes I want to have McDonald's, even though I'm vegetarian, but I'll have the French fries. But then I also want to have my salad or my pasta or my dal chawal, right? So you have to give a healthy mix of both things. So again, I don't believe in banning or ye na dikhao, wo na dikhao. But I think channels need to be more responsible in what they put out there. Right. Okay, we have another one from Seema Mushtaqi. Mehreen, are you planning on making anything like Jackson Heights again? It was so relatable for us. So I think this is a good time to talk about 7 Days in Coney Island. Yeah. I've just finished a 3-episode series. It's not finished. There's some days left of shoot. It's called 7 Days in Coney Island, and that will air on this new channel that's going to be launched, I think, in April or May, called Green Channel. So वो 3 episode का है. It's kind of not similar to Jackson, but it's about 5-6 Pakistani characters who live and work in Coney Island in New York. Nice. We have another. Thank you. Okay, I'll bring that up. Okay, so Mehreen जी, हमें बताएं कि यहाँ पे काम करते हुए and यहाँ के जो actors हैं, do you feel that you see a lot of potential? अभी यहाँ पे Miss Marvel's भी is also running. Do you feel that we, as the industry, अभी वहाँ से फवाद खान आ रहे हैं to play in Miss Marvel? Do you feel that we should find more talent here? We should give the talents here the platform, or should we have our talents come in from Pakistan? I think it's a mix. मैंने जब यहाँ काम किया, I think I've taken both. Like there's some जो वहाँ से आए हैं, obviously some channels demand के known faces हों, obviously.
Unfortunately, आजकल अमेरिका में सीरियल्स बनना बहुत कम हो गए हैं because of the dollar situation, and people are just, investors are not really investing for some. I don't know why. I think they should, because यहाँ भी इतनी मजे की compelling stories हैं, not just about immigrants, but just generally about you, me, both of you. इतनी कहानियाँ हैं. And I think यहाँ बहुत talent है. Whenever I put an ad कि मुझे actors चाहिए, मुझे बहुत अच्छा response मिलता है. जो कम होता है कि एक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उर्दू साफ नहीं होती काफियों की. सो मुझे फिर वहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं फिर दैट कैरेक्टर देन हैज टू प्ले समवन हु वाज बोर्न हियर, राइट? सो फॉर द साफ उर्दू आई हैव टू देन गेट समवन फ्रॉम देयर और फाइंड एक्टर्स हु कैन स्पीक दैट. सो ये मुझे ज्यादा इश्यूज आते हैं. आप उनको हमारी उर्दू अकेडमी में भेज दिया करें, क्योंकि कई उनमें से बाय द वे निकल के गए हैं. एक निम्रा याकूब हैं, बहुत जबरदस्त मॉडलिंग कर रही हैं, तो वो हमारे ही मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं. फहद हमारे उर्दू कैंप में बहुत आके, फहद अहमद कॉन्सर्ट करते थे. इसी तरह सलमान अहमद आए, उनके बेटे आए हैं. सो दिस उर्दू कनेक्शन इज समथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग, एंड for your sake and for our sake and for our community's sake, कि इस मुल्क में जब इतनी ज़बानें ज़िंदा हैं तो अपनी ज़बान क्यों नहीं, और अपनी ज़बान आइडेंटिटी देती है, अपनी ज़बान अपनी कम्युनिटी के अंदर स्पिरिट देती है, एंड देन ऑफ कोर्स देन वी कैन कंटिन्यू टू कीप कनेक्शन विद द home country for our youth and for ourselves, and I think it's very important. So आप जो कर रही हैं, आपका रोल बहुत important है. आप क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म दे रही हैं for learning Urdu so they can, come to you and do. And actually, हम एक panel कर रहे हैं अपना careers in Urdu, Urdu speakers. अपने इस Women International Day के दिन हम इसके ऊपर बात करेंगे. So this is one thing that I wanted to highlight कि यहाँ टीवी ड्रामास बन रहे हैं, यहाँ मूवीज बन रही हैं, तो अच्छे उर्दू स्पीकर्स चाहिए हैं. तो ये सबीना जैसे बच्चे हैं, इनकी बहुत डिमांड है क्योंकि अच्छे उर्दू बोल सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डिमांड है. सो प्लीज आप सीखें, मेरे पास आए फिर. मेहरीन जी, तो मैंने आपको वैसे पूछना ही था, but Amara sent in the question. What are your thoughts on the Aurat March and the role film TV can take in the initiative? So first of all, on the role of Aurat March, ये जो पूरा शुरू हुआ है campaign, what's your stance on it altogether? I mean, my standard is I fully support it. It's, I feel कि feminism and women's rights को इतनी वो गलत misinterpretation कर दिए हमारे एरिया में, और आपको पता ही नहीं कि वो what it stands for. It is all about equality in workplace, equality of income, equality in relationships, things like that, which are basic human rights. Women's rights are human rights. And so उसको हवा बना देते हैं because obviously patriarchy will always fight back. This is not just in Pakistan, it exists in America as well, as we well know. As we were talking about it, sort of 100 साल पहले women couldn't do so much. Right. So, and in many ways, Pakistan, I was just thinking in South Asia, we've had all women leaders, women heads of state, but in America, nahi hua abhi tak. all regions have had it: Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistan. So, however, having said that, there is a lot, because Pakistan unfortunately ranks at the bottom regarding women's emancipation and women's participation in social and civic and civil life. So there is so much to do. And film and TV, unfortunately, is playing a retrogressive role and not a positive role in that. And I blame producers and our writers. Unfortunately, most of them are women. And our actors who agree to work in these stupid, horrific plays, some of them, not all of them. We are all collectively responsible in the messages जो हम आगे बता रहे हैं लोगों को, society को. जी, बिल्कुल, क्योंकि आप लोग चेंज मेकर्स हैं. जो लोग देखते हैं वो बन जाते हैं. Media has a very responsible role, or this is the reason why we are having the talk, कि how can we emancipate women overall here, and especially we are going to talk about Pakistani and Pakistani American women, because we do get cases here which are very similar to Pakistan. यहाँ पे भी wife beating हो रही है, यहाँ पे भी immense persecution जो personal rights की होती है वो चल रही है. तो अगर हमारा मीडिया empowered औरत और उसको empower करने वाला मर्द नहीं दिखाएगा,
तो ये चेंज नहीं आएगा। अगर रोती हुई औरत हम देखते रहेंगे, देखना तो तरस खाना बहुत अच्छा लगता है हम सबको, और फौरन ज़कात के पैसे निकाल देना भी अच्छा लगता है। बट हाउ कैन वी शेयर, लाइक बेनज़ीर भी थी हमारे यहाँ, राइट? और शर्मीन उबैद निकल रही हैं, आप निकल रही हैं, शहरी रहमान है, और a lot नहीं, of उसके अलावा I feel grassroots पे आप look at I mean, the incredible heroes at the असमा town, जानी, village, no, at the village levels, at small town levels, women who are doctors, teachers, polio workers. There's so many little stories of these women who are not from our background, which is very privileged, राइट, but non-privileged backgrounds who are heroes and doing amazing work. उनकी जी, कहानियां ड्रामों में आनी चाहिए. जी, बिल्कुल, ग्रेट। So I agree. अब क्या करें, हम तो अग्री कर देंगे, बाकी राइटर्स को बताना होगा. Okay, so Okay. We have a message from Rubina Niaz. Thank you, Great Rubina. watching Mehreen. I've watched her evolve over the decades. Brilliant director, producer. I so admire you and your work. I hope to see you on March 6th. Thank you So, so much. yes, Thank you. March 6th. I'm going to let Nusrat announce it actually. but go ahead, do it. So, Mehreen Jabbar will be joining us on March 6th for our fourth annual International Women's Day. And आपके जितने भी questions है, you guys have that chance to ask her one-on-one. We'll Yeah, give you a little moment of questionnaire. And for me, it's a privilege for us to be hosting you. yeah, We honor women who take that stand. It's not easy. I understand the statistics and all the work behind being a director and how tough it is to even go ahead and form a product of yours, all the steps that go between the ups, downs, making a team, getting it to a television network. mhm, It requires really, really hard work and a lot of dedication and passion. right. And we As thank all fields do, but thank you. um, so we admire your dedication and providing us these stories, and we hope that you provide us with a lot more. Mm, And so yes, she will be there on March 6th, inshallah. Thank you. Okay, so another question. Okay, from Binish Aurat again. March. Do you think the message of Aurat March, specifically Mera Jism Meri Marzi, had something to do with the way it was interpreted in Pakistan? For example, conservative society or versus taboo topic, or would the march be interpreted in a way it was regardless of the messaging and slogan? I think, people take, this is one of the many hundreds of slogans that was at the march, right? Unfortunately, I've never been in Pakistan when the march is happening, so I've never attended one of them. I've always been here. But Mera Jism Meri Marzi was one of many, many, many other slogans. So in order to, someone just picked that up and made that into a big issue. It is almost like अगर आप यहाँ की defund the police वाली जो movement थी, वो Yeah. कह रहे हैं कि, which was, it's not about कि okay police को हटा दो street से. It was about something else. So people can't take slogans, especially in this social media world where you don't really listen. It's all about minute to minute kind of building up things that are lies and misinterpreted stuff. So yeah, I have no problem with Mera Jism Meri Marzi. It's perfectly fine. It was just used for the wrong purpose to Wrong. kind of discredit. But agar wo na bhi hota, people have had issues with it forever. So Have you faced any backlash like we did? We as a women organization had a little backlash with the whole whatever happens in Pakistan, all of a sudden it's like, oh, you're a women organization, you guys also. And I don't think we do get a little bit of that backlash here. Yes. Did you have to face anything? no, I did not. And also this backlash is, as I said, it jab bhi aapko status ko threaten hoga Yeah. by men who are small-minded, not all men, there are many men who are champions and supportive, but those men who are insecure and feel their power base is being threatened, they will always react this way, whether in America or in Pakistan. So हमें आसिम अजहर की खाला ने एक शाउट आउट दिया है. She is watching us and she is Farzana. She's saying it's a pleasure watching and listening to Mehreen. And Thank you. I worked with Asim and on that Candy project. He did the music and yeah, it was lovely. By the way, Gularana will be next week with us. Okay. Asim's mom. Cricket.
Great. Okay, so from Nabil, we have another question. Where and how can we take Pakistani content worldwide that most is needed and lacking? जी. I agree, because unfortunately, like India, which is a huge country, obviously, we do not have any kind of viable OTT platforms. By OTT, I mean things like जैसे Netflix, Amazon, Hulu होते हैं. India में Hotstar, Z5, Eros, Disney, अब तो सारे वहाँ के यहाँ के चैनल्स उधर भी हैं. हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री थोड़ी छोटी है. तो अभी मैंने yesterday रूमर सुना था कि नेटफ्लिक्स आ रहा है पाकिस्तान में to do originals. It has to be confirmed by Netflix, but if that happens, that's an incredible opportunity. So one way is to build, if Pakistani entrepreneurs किसी तरह OTT platforms easy नहीं होते because it requires a lot of, पैसे काफी बाद में आते हैं. But if we need some people to invest in that, because future हमारा digital ही है. TV रहेगा, but digital, it's growing and we have to invest in that. I That's think there's one way. Urdu flicks that's starting there. 'Cause I Urdu think, flicks छोटे हैं, the stars yeah. है, C But ये Prime जो है, green but है, green Green platform, is what is TV channel, but it will also become digital. so is जैसे green हमारे, channel Pakistani it's specifically Pakistani, American? it's Pakistani, but it will be I think shown here, just like इसके Jio, हम, ARY के भी आप programs YouTube पे तो देख सकते हो, and they get millions and millions of views. So मेरे ख्याल में तो मेहरीन आप अपना सिर्फ एक अलहदा खोल लीजिए, क्योंकि आपने इतना काम किया है और वो स्कैटर्ड है और हर जगह मिलता नहीं है. तो अगर आप अपना ही खोलेंगी, एक निवाला से लेके अब तक जो भी काम हुआ है, और जो आपके हम पहले बात कर रहे थे बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन, आपके वालिद साहब ने बनाई है, जावेद जब्बार ने, फर्स्ट इंग्लिश फीचर फिल्म, जो कि आई एम श्योर कहीं ना कहीं होगी और हम देखना चाहते हैं. अगर ये सब सिर्फ आपके ही एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो मेरे ख्याल से आप मेरा एक अदद है तो यूट्यूब चैनल, उसमें ज्यादा मैंने काम नहीं किया हुआ, बट उसमें जो मैंने चीजें बनाई थी इन द 90s वो अपलोड की हुई हैं, टेली फिल्म्स एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि उसके बाद फिर मैं एज डायरेक्टर फॉर हायर थी. सो जो कॉपीराइट है वो चैनल्स की है, मेरी नहीं है, which I can't. But regarding my father's film, I'll give a shout out, जो मैं पहले भी कह रही थी. He made this film in 1974. उसका एक प्रिंट बच गया था, बाकी सब बर्बाद हो गए थे, जल गए थे. तो एक हमारा प्रिंट हमें न्यूयॉर्क में मिला, लिंकन सेंटर पे. They actually traced us and found the print, and they said ये पड़ा हुआ है, इसका क्या करना है. So we are trying to raise money to restore the print, because वो था 35 millimeter का जमाना. I don't know किसी को भी याद होगा वो क्या था, but इतने बड़े negatives थे, वो prints थे. So we are trying to restore it, and we have a fundraising video online as well, मेरे channel पे, जिसमें पूरी film के बारे में details हैं. So hopefully वो बीच में COVID हो गया. I'm trying to re-establish that, because वो film actually एक वो है अक्कासी of the 70s पाकिस्तान, जो I think बहुत कम आपको देखने को मिलेगी in other films. इंग्लिश में, जो कि हमारे बच्चे भी So he shot it in English and in Urdu. and in Urdu, Yeah, but the English print is the only one that remains. right. Okay, from Sidra, we have a question. Or actually, I think she's just commenting. Pakistani channels should make dramas for kids and Urdu series for kids like Netflix, so we don't have to force kids to watch Pakistani adult dramas. I agree. We addressed that earlier also. Yeah. Yeah. बिल्कुल. So something on teens, young teens, middle school and high school phase. I also wanted to, हम थोड़ा सा history में चल गए थे, so I was going to take you right back to 1994, where your first play, Nivala, was made, and it was a play on from Ismat Chakdai's stories when Nusra Ji is their granddaughter. Yeah. बिल्कुल. That was the first thing I did. It was a short story, Nivala, जो फिर वो बनाई, and वो फिर बैन ही हो गई. फिर वो 6 साल बाद फिर इंडस टीवी पे चली है, which I will upload on YouTube. Yes, soon. I was going to say that maybe we can catch soon on Yeah. Mehreen's channel. राइट. तो आपसे हम ये सारी लिंक ले लेंगे और अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करेंगे. सबसे पहले तो आपके जो डोनेशन है जमा पैसे करने के लिए बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन, उसके लिए हम पोस्ट करेंगे. फिर आप अगर निवाला अपलोड कर दें तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू पोस्ट दैट. वी हैव अ डिसेंट फॉलोइंग एंड आई थिंक अ मोबिलाइज्ड कम्युनिटी है यहाँ की, तो कुछ ना कुछ तो वी विल मेक इट हैपन इंशाल्लाह. And Robina Niaz is also saying perhaps Woman to Woman can find Pakistani entrepreneurs to invest into Mehreen's projects. Yes, anytime. As I said, filmmakers are always looking for producers. Okay.
Um, Here's a question from Danish. Were there times where you were forced to change your content because it was considered too daring of a topic? Nice Interesting question. question. Yes, yes. I don't think so. I think we might have had to, because I've grown up at a time jab 90s mein it was Benazir आई थी, and we've kind of grown up in a culture of censorship. So वो automatically, unfortunately मेरे blood stream में है कि मैं क्या कह सकती हूँ क्या नहीं कह सकती, especially अगर मैं टीवी के लिए कुछ बना रही हूँ. So I know कि this is the line I can cross, this is the line I cannot cross. So automatically उतना हम किसी और क्रिएटिव वे में सोचते हैं कि किस तरह वो बात बताई जाए, ताकि पता ही ना चले सेंसर वालों को कि वो बात भी कह दी और वो उनके सर के ऊपर से निकल. सही. तो आप जो हैं मेरीन नोन हैं यहाँ के टैलेंट को भी हाईलाइट करने में, जैसे फहद अहमद जो हैं, जो जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, वो आपकी जैक्सन हाइट में आए और उसके बाद इतना उनको अच्छा लगा कि ही took up acting professionally, and he's now in Pakistan and pursuing it. So when we talked about empowering yourself and others, so this is one of the example of it. और हम लोग बात करते रहते हैं अक्सर कि अरे पाकिस्तानी जो है फिल्म फेस्टिवल लेके आना चाहिए और मेहरीन को एंगेज करेंगे और इसको एंगेज करेंगे, एंड लेट्स डू समथिंग अबाउट इट हियर, बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर all countries bring their culture and it flourishes. So if you start doing something like that, why not? So I'm just saying कि आपका रोल है टैलेंट आइडेंटिफाई करके उनको आगे बढ़ाने में. So I think it has happened intuitively, not maybe purposely. मगर अब जैसे अभी किसी और ने भी कहा था, क्या कोई प्लान किया जा सकता है, not just workshop but maybe a little प्रोग्राम जहाँ टैलेंट आए, अपने आप को पॉलिश करें, उनको चांस भी मिले आपकी किसी उसमें, and that would itself be organically money raising concept for you. So have you ever envisioned yourself in that capacity? No, it's a good idea. Abhi pehli that is a good idea. I think whether it's kind of जैसे यहाँ पे होता है एक project green light है, or maybe invite people who are interested in acting, maybe have some workshops with them, film them, and कौन निकलता है, because a lot of people I know यहाँ पे Pakistanis काफी मुझे messages आते हैं कि हम वहाँ की industry में कैसे break through करें. So there are kids मतलब young adults जो चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी ड्रामे में काम करें. मुझे तो बहुत आते हैं messages. So I can only say भाई उर्दू ठीक करो और फिर पाकिस्तान जाओ. I can connect you with people. That is one way. And I'm hoping also, as I said, I hope there's more material made here Pakistani diaspora को लेते हुए जैसे हम बनाते थे पहले. And I hope बनना शुरू हो जाए दोबारा. ये डॉलर ने बहुत मुसीबत कर दी है ना. पता नहीं 178 हो गया या पता नहीं क्या हो गया. हमें अपना वर्कशॉप का कैंडिडेट तो हमारी दोस्त मिल गई हैं. We had one candidate. उनका Seema's like, I would love to come. And we had so I mentioned backstage, but we didn't get to mention that my director and I've been working with, and we did our production series. It was on breaking taboos, and we had a lot of these community people in the community who joined us in this project to start it up. And we do want to take it further, and we found amazing talents on our in our journey, I want to say, of these 12 episodes that we created. And we wish to work with directors like you and possibly collab with directors like you, or there's also Iram and all the other people working in Hollywood. So where do we begin? Where do we begin to build that and go forward? I think there are a couple of things. Obviously, एक तो इसकी पूरी logistics of what the structure of the show could be. One has to organize that, get a team together, and क्या format होगा जैसे आपने किया. I would love to see that series also, and then how to bring that into the knowledge of the Pakistani community and how to spread the word so that people come in. So I mean, there's a
2-3 pronged strategy that can happen. It's totally possible. It should, because as I was mentioning, I think the Indian community is far more active in the entertainment media sector, but Hamari community is not. They are very supportive to each other. I think we need to be a little more proactive, because as someone mentioned aapke question and answer mein, the one of the ways, and that's what Iran does really well, because Iranian cinema is so brilliant, is one of the ways to tell your own story is through television and film, and Pakistan is lacking on that front. Okay, from Amara, we have another question. There are a lot of talented young Pakistanis that are looking for mentors and pathways in the film industry. That's a good idea. Cool. And along with talent, so on our woman to woman platform this time, inshallah ta'ala, we're going to have a big series of talents that are coming in, actually. So we're actually having a talent show right on our International Women's Day. Last 2 years back, we started this platform on introducing new talents to the community. And Pakistani talent itself, it's so difficult for a lot of them, because they do have to explain to their parents about this industry. This industry, in a way, is looked down upon, unfortunately. Yeah. And definitely. I just wanted to add on that too, that not just looked down upon, but we have no platforms where they can come and pick up a mic or go on the stage. We have nothing. So our youth does not know where to share their expressions, due to which we do not find any talent. With Indian culture, they have this dance society, that Indian society, and everywhere they're doing skits and dances and singing. So we don't have any of that. I'm sure we have. It's just about when I moved here many years ago, I did 2 shows, one for Geo and one for Hum, which was highlighting the South Asian success stories in New York. It was not just entertainment, but I covered restaurant owners, yoga teachers, things like that. यहाँ पे हैं Pakistanis probably जो बहुत काम कर रहे हैं, but we don't know of them. And I think an idea could be to find those and make a show out of people who are working in the entertainment media industry, find them, interview them, and talk to them about their experiences. And that would be a way to show the diaspora, the young people, the young Pakistanis, okay, so we can see, let's say, 12 people in this industry. Koi actor hai, koi executive hai, koi singer hai. And these are the people, as I mentioned, Arooj Aftab is the first female Pakistani who's been nominated twice for the Grammys. But no Pakistan, I haven't heard of any Pakistani Americans celebrating or supporting or doing anything. Whereas India ki pehli documentary feature has been nominated for the Oscars, and the Indians are going crazy. I've attended support parties. So that's what I'm saying. So we need to empower our own people. जी, मेरीन, उनको मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, तो मैं कामयाब नहीं रही, और अब आज मुझे पता चल रहा है कि आप उन्हें जानती हैं. So I mean, I would love to meet with her. She has done some amazing job. रूमी को जो उन्होंने गाया है, और वो जो बागों में पड़े झूले, उफ, जिस तरह, her version is beautiful, beyond beautiful. No, bilkul. And us tarah bhi, there are so many people. There are women cinematographers, there are women directors, Pakistani, I'm saying. Yes. It's just you need to get them onto one platform so we know about them. Right. So from Robina Niaz, we do have some groups. The Muslim Writers Collective, yes, founded by Hamdan Azhar, has been quite successful. Yes. मेरे लिए थोड़ी सी आई है, Sabina, find corporate sponsors. I have been. Yeah, we brainstorm creative ideas, because as we were talking about Women March, and we are often, when we reach out to businesses, we are called, are you Aurat Marchers? So we are labeled, and that is a derogatory term right now, and we say no, we are not Aurat Marchers, but we are women empowered. I mean, someone who empower women, and they say that it's the same thing. So that concept of women-led organization isn't there. If you see in the community, there'll be good restaurants and good parlors and all that, but there will be a men lead in it, and who doesn't allow sponsorship for women organization to go to. So we try some different methods. Like right now, me and some of my team members, we teach Urdu, and our teaching funds go into our organization so we can support our little project. I think Riz Ahmed is also, and there's something called Pillars Fund.
which is also for Muslim filmmakers. So there is stuff happening, but that is for the Muslim community. It's not specifically Pakistani. Yeah. Okay, good to know. Thank you. Okay, we have about 5 minutes. Mehreen ji, I do want you to take some time out and talk to our audiences and our women. Again, this is about inspiring women, empowering women. What do you, in besides your work, how do you see the women here? Have you seen a trend of them being more outgoing, more loud, more professional? And what do you see that we're still lacking here as Pakistani American women? Oh, And maybe Pakistani American women. जी. ओके तो बहुत वास्ट आपने एक मुझे वो दे दिया. मैं कुछ लोगों से मिली हूँ, सबसे तो नहीं मिली. I've met all kinds of very proactive. I feel यहाँ हमारी diaspora is very strong also and very. I find them whenever I've gone, अगर festivals में मैं गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे minority हर वक्त पाकिस्तानियों की होती है, majority Indians की होती है. So, but Pakistanis, when you meet each other, then you bond and you know exchange ideas. I think there's a lot happening. Yes, there are obviously sections jahan jo baat ho rahi thi, there is still, marriage issues, domestic abuse, and all of that still exists. But there are very, very emancipated Pakistani American women as well, which is what I'm saying we need as a community to highlight those stories, because there are two right in front of me, right? So where are those stories to share within our communities? Chota chota karke nahi, we need to have a grassroots kind of thing. I don't know, I don't want to generalize. It's very tough to answer questions in a general manner because sabke experience is different, right? So I can't really. Or दूसरा मैं बोलूंगी कि if people do want to reach out to Mehreen, what is the best way to reach out? Can you send them a message on Instagram? Instagram is best. Facebook page. Facebook तो वो ऐसा वो डायनासोर हो गया कि वो मैं अब messages तो check ही नहीं करती. So Instagram, ever since it became Meta, I don't even know. I just kind of look at it, but I don't engage. But Insta is the best way, and then email. I'm still email person. So you guys can email Mehreen ji. Find her on Instagram. Rubina Niaz कहती है, I think if we stop sugarcoating issues that exist and call them for what they are, we can change the status quo. I believe we need to take the bull by its horns and confront issues head on. Good. Absolutely. Right. मिलके. हाँ मिलके. एक bull कम damage करेगा. A horde of bulls will do it. Right. बाकी अभी 7 days in Coney Island, of course, is your current project. उसके बाद आपके what's in the kitty? What are we looking forward to? I'm still developing stuff. I'm doing a 4-episode series for Jio in May. So hopefully that वो आप YouTube पे देख सकोगे और Jio पे at some point. I'm still pitching. I have a couple of ideas that I'm developing and looking for funding. And, that's what filmmakers are. We always freelancers. It's always, you finish a project, then you have to figure out the next one. And I finished a series with Z5 called Farar in October. It's based on my telefilm that I did in 97 called Farar. So it's an expansion. It's a 6-episode series that should be on air in about 3-4 months. Jo Jio ke saath hai, is that going to be also filmed here, or is that going to be back overseas? It's there, unfortunately. I'm really trying to do stuff here, but it's a tough sell for Pakistani producers. Kya kare? We can understand, and hopefully somebody's listening to us. So yeah, let's hope we get the message across. Nusrat ji, चलें बिल्कुल हमारे आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं. So चले एक थोड़ा सा मौसम की बात करते हैं. वहाँ कैसा मौसम है? इतना ही आसान सवाल कर रही थी. मैं कह रही थी कि आप पाकिस्तान जाती होंगी तो घर से जरा बाहर निकलना मुश्किल लगता होगा कि अरे फैन आ गए, पकड़ लिया उन्होंने, पापराजी पहुंच गए. तो यहाँ न्यूयॉर्क में आपको एक कुछ थोड़ी सी आसानी लगती होगी. क्या ख्याल है? नहीं, ऐसे कोई फैन नहीं आते, कोई नहीं मुझे पहचानता. बस ये है what I miss in Pakistan is I can't walk because New York is a walking city, and that's why I moved here. कि आप मैं निकल के I can walk and walk and walk. I don't have to drive, which is lovely. So I love both places. I love New York. I love Karachi. They're both home. आपने UCLA में पढ़ा, कराची में बड़ी हुई, तो न्यूयॉर्क क्यों पिक किया यहाँ आने के लिए? क्योंकि न्यूयॉर्क में लाइफ है. It reminds me of Karachi. And I don't have to drive. Even though I drive in Pakistan, I hate driving. So I can't bear it. I want to get out and be close to everything. I love trains. So simple.
And New York is a melting pot. हर दुनिया का हर बंदा इधर है. न्यूयॉर्क इन मेनी वेज कराची जैसा ही लगता है, बिल्कुल. वो पाकिस्तान का मेल्टिंग पॉट है, कराची जो है, और न्यूयॉर्क दुनिया का मेल्टिंग पॉट है. बिल्कुल. कराची में जितने जबरदस्त खाने मिलते हैं, उसी तरह न्यूयॉर्क में हर खाने मिल जाते हैं. बल्कि इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि थाई खाऊं या मैक्सिकन खाऊं या देसी फूड ऑर्डर करूं. जी, और या घर में अच्छी सी खुद कॉफी बना के पिएं. अब Exactly. 3 बज गए नहीं, कॉफी नहीं, अब मेरे ख्याल है लंच टाइम हो गया अब चलिए, ठीक है. तो. बहुत Well, शुक्रिया yes, thank आपका. you. आपने इतना मजे का टाइम दिया, पता नहीं चला 1 घंटा कहाँ गुजरा. और Thank you. I really appreciate it and looking forward to meet you in person on March 6th, inshallah. Thank you, both of you. It was a pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.